Hello students, good morning to all of you. We have completed the chapter limits. Today we will start differentiation. Okay, under the chapter differentiation, the first topic is again the limit only, that is differentiation using first principle. Okay, now how to differentiate a term using first principle, where we will not use any differentiation formula, we will not use any differentiation concept, we will use the definition of differentiation. Now what that first principle say? By first principle, dy dx, that is differentiation of y with respect to x, is nothing but also called as a dash x, that is equals to limit x h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h, where in the book, in the place of h, you will see del x. Okay, it is not dx, it is del x. Del x. तो मैं books में ऐसा लिखेगा x plus del x minus f of x by del x. So I'm not writing del x because it makes the students confused. So I'm writing in terms of h. So this is the first principle. So by the first principle, they say if we want to differentiate any function, we have to solve this limit. Instead of differentiation, if we solve this limit, we get the differentiation. That means I will solve the differentiation. I will do the differentiation of a function, but not using differentiation formulas, but using limit concept, that is first principle. Let's take a small example. Differentiate sin x using first principle. So we know what is differentiation of sin x, cos x. Formula मुझे पता है पहले से. Differentiation sin x cos x होता है. So let's check whether I am getting cos x or not using first principle. Okay. When the first principle, what are the things I need? I need f of x plus h. I need f of x. Now solution start from here. Whichever term you need to differentiate, take it as f of x. जिसको भी differentiate करना है उसको f of x ले लो. So what is f of x? Sin x. और दूसरा हम लिखेंगे f of x plus h. Now see, listen very carefully. Here we have x, so here we have x. Now in the place of x we have x plus h. So wherever we have x, in the place of x we have to write x plus h. Okay, so f of x sin x, f of x plus h, in the place of x we have x plus h, sin, in the place of x we will have x plus h. Now by first principle, what is f dash x? Limit x tends to 0, f of x plus h minus f of x by h. Now substitute value limit x tends to 0, what is f of x plus h? Sin of x plus h minus sin x by h. हो गया. इतना तुम्हारे लिए नया है. This is new to you. After that you solve the limit. You go for the limit concept, whatever we have said till now. If we directly substitute the h value here, it comes infinity, नीचे 0 आ जाएगा. So what you have to do? You have to go for process. Now we can see a formula sin a minus sin b. Apply the formula 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2. Okay, after doing any process, what your job is? Substitute the h value here and see which is coming 0, which is not coming 0. This term will not come 0. h 0 डालो. 2x by 2 x आएगा, so this is coming finite, but this will 0, sin 0, h by 0 by 2 is 0, sin 0 is 0, this is 0. So these two are coming 0. So इसको अलग कर दो. 2 is constant, taken out limit h tends to 0 cos of 2x plus h by 2 into limit h tends to 0 sin h by 2 by h. Okay, so how we understand this? We are studying the protocol of limit. After doing any process, you end up with certain terms. Substitute the limit value and check which term is coming finite. So I understood this term is coming finite, so I have segregated that to limit. And rest of the term I left with limit h tends to 0 sin h by 2 by h. Now this becomes the formula sin theta by theta. नीचे 2 का कमी है. h by 2 नीचे h by 2 चाहिए into 2 divide by 2 हो गया. Now 1 by 2 will come out common. Okay, इसमें limit put कर दो. 1 by 2 come common. Now limit h tends to 0 sin h by 2 by h by 2. Now this becomes a problem, but there is a small deficiency. Limit theta tends to 0 sin theta by theta. यहाँ पे theta आना चाहिए. h by 2 यहाँ भी h by 2 आना चाहिए. So we can do divide by 2 both the sides. So divide by 2, 0 by 2 is 0. So this becomes a formula. Okay. So this 2 and this 2 will cancel out. 2x by 2 is 2 into this is 1. So what is f dash x? Cos x. Answer आ गया. We already know differentiation of sin x is cos x. Okay. So this is a very small example I've discussed. Let's go to the higher level of the questions. Okay, now see, let's go to a little bit high level of question. Differentiate sin x square using first principle. Sin of x square. Now here the student make mistakes. If you write like this, they think that it is sin x whole square. No. जो पावर साइन और थीटा के बीच में आएगा वो होल स्क्वायर होगा. ये साइन x square है. That means the power square is with the theta. So we cannot write in this way. इस तरह से लिखोगे तो गलत होगा ये. Okay, so sin of x square. So we have to differentiate sin of x square using first principle. So whichever term you have to differentiate, take it as f of x. So what is f of x? Sin of x square. What is f of x plus h? Wherever you have x, in the place of x, you have to write x plus h.
sine of x plus h whole square. Now by first principle under the definition f dash x equals to limit x tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Now substitute the value. Limit x tends to 0 f of x plus h मतलब क्या sin of x plus h whole square minus sin x square by h. अब यहाँ पे स्टूडेंट फिर से एक गलती करते थे, अप्लाई द फॉर्मूला sin square a square and b square. Again I am saying this is not whole square. The square is only with the angle. Okay, so we cannot apply that formula. So we left with only one option. Directly put करूँ तो infinity आएगा. Formula लगाओ sin a minus sin b. So 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2 divided by h. Now after applying the formula we need to check कौन सा term finite आ रहा है, कौन सा term zero आ रहा है. So if we substitute zero आ रहा है, this 2 is constant coming out, zero double. X plus 0, x square plus x square, 2x square by 2, x square आ रहा है. This is coming finite. Okay, तो इसको अलग कर दो लिमिट में और इसे पुट करो 0. x square minus 0, sin 0 is 0, यहाँ पे 0. Okay, this is coming 0, 0 by 0. So इसको अलग से लिमिट में कर दो. Limit x tends to 0, sin of this by h. हो गया. Now, why I have segregated this term separately because so that I can substitute h here 0. मुझे पता चला ये फाइनाइट है, इसको मैंने अलग कर दिया लिमिट में. क्यों किया लिमिट में अलग? क्योंकि इसमें h 0 डालना है. तो 0 डाल दो. Cos x plus 0 whole square plus x square by 2. 2x square by 2 that is 2 to cancel cos x square वो रहा cos x square into. अब यहाँ पे देखो हाँ लिमिट x tends to 0 ये बाई ये था तो ये लिमिट x tends to 0 sin थीटा नीचे थीटा चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए. लिमिट x tends to 0 sin थीटा बाई थीटा चाहिए तो जो भी यहाँ पे थीटा मैं उसको नीचे लिख दूंगा. लेकिन लिखने से पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या ये थीटा मैं यहां बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं. लाइक दिस द फॉर्मूला इज दिस ना लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा दैट इज 1. तो यहां जो भी है मैं उसको तो यहां लिख दूंगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कैन वी मेक दिस थीटा हियर दैट यू नीड टू सी. सो व्हाटएवर यू हैव हियर थीटा इज दिस द बिग टर्म वी हैव इन थीटा. सो बिफोर डिवाइडिंग दिस थीटा इन द डिनोमिनेटर वी हैव टू चेक वेदर दिस थीटा वी कैन मेक इट हियर और नॉट, जो कि मैंने रफ में सोच लिया पहले से, इसलिए मैंने इसको फॉर्मूला बना रहा हूं. तो मेक इट इन अ फॉर्मूला वी हैव टू सी ना वेदर द होल थिंग इज मैचिंग और नॉट. थीटा थीटा एंड दिस शुड बी थीटा. So whatever we have with sin, I can add that term in the denominator. That is not a big issue. The issue is that can we make that term in the limit or not. So the वो term है क्या? X plus h whole square minus h square by 2. यहाँ पे x tends to 0 है. Okay, तो कैसे पता किया? देखो adding x both the sides. Adding x both the sides. X plus h tends to 0 plus x is x. Now और क्या है? Whole square भी है. So taking whole square both the sides. उसके बाद क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, सबट्रैक्टिंग माइनस एक्स स्क्वायर बोथ द साइड्स 0 आ गया, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड्स बन गया ना ये पूरा टर्म. सो ये थीटा पूरा बन रहा है. दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग इट एन एंगल ऑफ फॉर्मूला पैटर्न sin थीटा. वी नीड दिस थीटा इन द डिनोमिनेटर सो आई एम एडिंग ऑन ओन इनटू बैलेंस कर रहा हूं. ये चीज एक्स्ट्रा ऐड किया x plus h whole square minus x square by 2 ऐड किया. सो इनटू x plus h whole square minus x square by 2 नीचे क्या बचा h यहां लिख दिया. So to make it in a formula pattern, before make it in a formula pattern, you can see that the theta which you have here is such a huge big term. To make this theta in the denominator is not a big issue. We can write it down. The only problem is that can we make this theta in the limit? So that we have cross check there. कि मैंने वो पहले जब cross check कर लिया, हाँ बना सकता हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. Okay. Now see, this becomes a formula. Limit ये चीज मैं वहां पे ये चीज मैं यहाँ लिख सकता हूँ. Limit theta tends to 0 sin theta by theta. This becomes formula को अलग कर दिया. Okay. Till now I haven't written the theta value, only h written लिखा है. Limit x tends to 0 sin this by this into limit x tends to 0 this term. Now in this term I can make this theta here, right? I've already understood that we can make this theta. So the next step, in the place of h I'm writing this x plus h whole square minus x square by 2. Limit x plus h whole square minus x square by 2 tends to 0 sin of this by this. Okay, now this becomes a formula. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा. ओके, तो ये अब जब हमने पहले इसको डिवाइड क्यों मारा? बिकॉज वी अंडरस्टूड दैट दिस विल बिकम अ फॉर्मूला, बिकॉज दैट थीटा वी कैन मेक इट इन द लिमिट. इसलिए मैंने अलग करके पहले सब कुछ अलग अलग कर दिया, उसके बाद थीटा के लिमिट की जगह में थीटा लिख दिया. क्लियर? और इसके साथ क्या करूंगा, 0 पुट करने से फिर से इंफिनिटी आ रहा है, नीचे 0 है, तो फिर से सिंप्लीफाई करो, प्रोसेस करो. ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लगाया मैंने, a minus b, a plus b. Clear? So what will happen now? 2 cos x square into this becomes 1 into
1/2 बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x x कट जाएगा, बिकम h 2x plus h whole divided by h. h is cancelling out. Okay, denominator gap. Now you can easily substitute the h value because this will never come infinity. Okay, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos x square into half कट गया into 2x plus 0. Okay, so finally we got 2x cos x square is f dash x. Okay, so what you got f dash x? 2x cos x square. So f dash x is 2x cos x square. Okay, now let's cross check whether it's correct or not. So this differentiation, you know what is f of x? Sine of x square. Now if you want to differentiate this term, you have to change to sine theta, sine x cos x into differentiation of x square is 2x. So it's matching. So in first principle, whatever the answer you are getting, you already know the answer using normal differentiation, because normal differentiation you already studied. ओके, नॉर्मल डिफरेंशिएशन तुम तो पढ़ चुके हो, तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, तो ये ऐसे चेक कर सकते हो कि ये मेरा सही आंसर आया है कि नहीं आया है. ओके क्लास, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट tan x square using first principle. Okay, solution f of x equals to whatever the term you have to differentiate tan x square, f of x plus h, wherever you have x you have to write x plus h, tan of x plus h whole square. By first principle, what is f dash x? Write in the formula limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Okay, now substitute the value. Limit h tends to 0 f of x plus h is what? Tan of x plus h whole square minus f of x is tan x square divided by h. अब पहले जो क्वेश्चन में क्या था, ये फॉर्मूला बन रहा था ना, दिस इज नॉट tan स्क्वायर x, a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगेगा, दिस बिकॉज ये होल स्क्वायर नहीं, ये थीटा के अंदर स्क्वायर है. तो tan a minus tan b, do we have any formula of tan a minus tan b? We do have a formula of sin a minus sin b. इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लगाया sin a minus sin b, but we don't have any formula of tan a minus tan b. तो जब भी tan वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो. तो tan को sin by 2 करो, किस लिए करो, फॉर्मूला नहीं बन रहा भाई, tan a minus tan b, there is no formula. So I'm converting into simplest form, sin x plus h whole square by cos x plus h whole square minus sin x square by cos x square divided by h. Now take LCM. Okay, if you take LCM, ये cos x square into sin x ये आ जाएगा, minus sin x square into this आ जाएगा, divided by cos x square by cos x plus h square whole divided by h. So it is divided by h, so into 1 by h, तो ये आ जाएगा h cos x square cos of x plus h whole square. ये समझ में h यहाँ से क्या है, कैसे आया? This whole thing divided by h है, so into 1 by h, तो इधर h आ जाएगा. Now ऊपर में फॉर्मूला बन गया sin a cos b minus cos a sin b, sin of a minus b, sin of a minus b, x plus h whole square minus x square. After converting tan into sin cos, after taking the LCM, these are things what I did. We did a process. Now we end with different terms, 1, 2, 3, 4. Out of these 4 terms, this is a constant. Why? Variable is h, cos x square is constant, बाहर आ जाएगा. We don't have to worry about this because we don't have any variable. h is a variable. यहाँ से variable पता करते हैं. h है ही नहीं यहाँ पे. This is a constant. बचा 1, 2, 3 टर्म. इसमें h 0 डालो. इधर तो 0 आएगा. इधर 0 डालो. x plus 0, x square minus x square, sin 0. Sin 0 0. This is 0, this is 0. But put 0 here. x plus 0, cos x square. This is coming finite. तो ये constant बाहर आ गया. इसको लिमिट में अलग कर दिया. Limit h tends to 0 1 by cos x plus h whole square. Why? Because it is coming constant. It is coming some finite value. So I'm limit this by this. Okay. समझ में आ गया ये लाइन? This is a constant, we take it out. यहाँ पे finite आएगा सब्स्टिट्यूट करने से, बचा ये दोनों 0 आ रहा था. अब sin थीटा, नीचे थीटा चाहिए, sin थीटा. But before adding the theta denominator, you have to check whether we can make this theta in the limit or not. तो लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0. यहाँ पे क्या चाहिए, x प्लस h, एडिंग x बोथ द साइड्स. देन क्या चाहिए, होल स्क्वायर भी चाहिए, सो डूइंग होल स्क्वायर बोथ द साइड्स. देन क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, सब्ट्रैक्टिंग x स्क्वायर बोथ द साइड्स. ये 0 हो जाएगा. सो वी कैन मेक इट. इसको मैंने अलग कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस. ओके, इसके नीचे बना दिया x प्लस h होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू x प्लस h होल स्क्वायर. ठीक है, तो बनाने से पहले मैंने क्या चेक कर लिया, मैंने चेक कर लिया दैट वी कैन मेक द लिमिट. We can make the theta in the limit or not. Yes, we can make the theta in the limit. So
Sin theta, niche theta, I'm adding on a into balancing also. Rest of the term is this. Now this becomes the formula. So limit s tends to 0, इसको अलग कर दो, into limit s tends to 0, इसको अलग कर दो. Now to write it in a formula pattern, still it's not exactly in the formula. Sin theta by theta niche theta होना चाहिए. So in the place of h, I'm writing this term. X plus h whole square minus x square. Okay, these things I think you can understand. Cos x square, cos of x plus h whole square, cos x square, cos x square, cos x square, cos square x square, and that is sec square x square. Okay, तो अब इस लिमिट को यहाँ बना दिया. Now this becomes 1 into what to do with this? Again we cannot substitute 0 directly here. नीचे 0 आ जाएगा. So इसका बाद इसका फॉर्मूला लगाओ. Okay, a minus b plus b, a minus b x x कट गया, h h कट गया. So what is left with? x square into 1 into इधर क्या आ जाएगा 2x plus h 0. This becomes finite. h can substitute कर दो 2x plus 0. Okay, so what is got 2x x square that is your f dash x. Now let's check in rough. Did we got the correct differentiation or not? So what is f of x? Tan x square. इसको differentiate करो. ddx of tan x. X square x, इसको x माना है. ddx of x square is 2x. 2x x square. We got the answer. That means we are being correct. Okay, let's go to the next type of sum. Okay, the next question. Differentiate sin root x using first principle. Solution same रहेगा. ये सब line same. f of x equals to sin root x. f of x plus h sin of under root x plus h. Now what I will suggest you that stop watching the video anymore. Okay, वीडियो को रोक दो. तुमने समझ लिया कितने सारे क्वेश्चन. अब तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है, तुम खुद से ट्राई करो और फिर देखो सोल्यूशन में मैंने क्या किया, तुम कहाँ गलती हो रहा है सोचने में. Where you making mistake, what step you cannot think. You have to analyze yourself. You have to look into your mind frame that which step I cannot think. After doing so many questions, these questions you can do on your own. But also I am doing it so that more and more concept you can understand. So don't just watch the video and start seeing the solution. Okay, instead you have pause the video, see the question, try to do it on your own, and then check out the solution. Okay, so what is f of x? Equals to sin root x. What is f of x? Sin of under root x plus h. By first principle फॉर्मूला लिख दिया मैंने, वैल्यू डाल दिया. f of x plus h की जगह sin of under root x plus h माइनस f of x की जगह में sin root x by h. Now अब क्या करूं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. 0 नहीं, नीचे 0 आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा. सो गो फॉर द फॉर्मूला sin a minus sin b. 2 cos a plus b by 2. a is under root x plus h plus b is root x into sin a minus b by 2. After doing a particular process, check करो कौन सा इंफिनिटी है, कौन सा 0 आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है. 2 is the constant, इसमें 0 डालोगे, h की जगह 0 डालोगे तो this will come as finite value. 0 नहीं आएगा, this will come 0 डालो h की जगह, root x minus root x, sin 0 0. So these two are coming 0. So इसको 2 constant, इसको लिमिट में अलग कर दिया into limit this term. Okay, this thing we are doing continuously from last 3 to 4 sums. Okay, now इसमें मैंने 2 लिमिट पुट कर दो, root x plus 0 plus root x divided by 2. So root x plus root x, 2 root x by 2, 2 कट गया, cos root x हो रहा है. into इसके साथ क्या करेंगे? So sin theta, नीचे theta बनाना पड़ेगा. So before making this theta here, you have to check whether we can make this theta here or not in the limit. तो हम बना सकते हैं. अभी तक समझ में आ गया. Adding x both the sides, x plus x tends to x आ जाएगा. Taking root both the sides, okay, then subtracting minus root x both the sides, then dividing by 2 both sides. I'm not writing that step. I think you have grown up enough to understand that we can make this thing here. Adding x both the sides, x plus h tends to x आ जाएगा. Taking root both the sides, देखो आ जाएगा अपने आप. So मैं इसको यहाँ बना सकता हूँ. So what I'm doing, sin theta नीचे theta लिख दे रहा हूँ, into balance कर दे रहा हूँ. Rest over term I'm writing here. Okay, sin theta नीचे theta लिख दिया खुद से. Whatever you can see here, I'm writing that now into balance करो इस term को. और rest over term is h, I'm writing here. Now ये फॉर्मूला बनेगा, इसको लिमिट में अलग करो. लिमिट ऑफ दिस into लिमिट ऑफ दिस अलग कर दिया. ओके, नाउ आप इसको फॉर्मूला बनाने के लिए ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा. सो लिमिट लिख दिया मैंने, अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स by 2 tends to 0. In the place of h, I'm writing this. This becomes a formula into what to do with this. Can I substitute h directly 0 here? No. Again infinity आ जाएगा. तो रूट है, रूट में क्या करते हैं, प्रोसेस क्या बोलता है, रूट whenever you see root you have to rationalize. So I'm rationalizing the term. Under root x plus h minus root x क्या हो जाएगा,
same term with a plus, rationalize करो. Okay, so this becomes 1. Now when you do rationalization, you always end up with the formula a square minus a minus b, a plus b, a square minus b square. So a square under root x plus h whole square become x plus h minus root x square is x divided by 2h into this term. देखो अब यहाँ पे x x cancelling out, h is cancelling out. Okay, and this becomes 1. So 2 cos root x into 1 into limit is 1 by 2 this. Now what to do with this term? Again substitute करके देखो. So it will never come 0 because it is plus root x. तो इधर 0 डालोगे तो root x plus root x, it is coming finite. I'm substituting the h value 0. हम substitute कब कर सकते हैं? जब वो infinity नहीं आता है. तो यहाँ पे infinity नहीं आ रहा है, नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो हम substituting the value under root x plus 0 plus root x. h का value 0 डाल रहे. Okay, 2 is cancelling out. Cos root x by root x plus root x 2 root x. Okay, let's check out whether the answer is correct or not. What is f of x? Sin root x. Then what is f dash x? dx of sin root x is also cos root x into dx of root x is 1 by 2 root x. Chain rule. Sin root x, cos root x, root x can 1 by 2 root x. So cos root x by 2 root x. We got the answer. Okay. So we can cross check every question we need in the first principle. Okay, class, the next question. Differentiate tan root x using first principle. ऐसे क्वेश्चन थोड़े पहले फिर से किया था. Differentiate tan x square किया था. Okay. जो मैंने पहले किया, whatever we did in tan x square, same thing you have to do here also. So tan root x, f of x is tan root x, f of x plus h, tan of under root x plus h by first principle. Limit s is 0, tan of x plus h minus tan of root x, tan of under root x plus h minus tan root x by h. Now, we don't have any formula of tan a minus tan b. So similarly, in tan x square, we converted sin x square by cos square. यहाँ भी वही करना पड़ेगा. Tan को sin by cos convert करो. Take LCM. Okay, तो sin a into cos this minus cos sin a into this. Okay, नीचे क्या बचेगा? Cos root x into cos of this whole divided by h into 1 by h. तो ये h नीचे आ जाएगा. Now ऊपर फॉर्मूला बन गया sin a cos b minus cos a sin b sin of a minus b. Now, after converting tan sin by cos and applying the formula, okay, see, try to understand the pattern. The question solving this pattern and the previous pattern is same, exactly same. But in the place of x square, we have root x, nothing else. Okay, now, after getting this, we got this term, this term, this term and this term. Out of this term, this is a constant because यहाँ पे h नहीं है, बाहर आ जाएगा. वो देखो ऊपर, बाहर आ जाएगा. Next, इस term में अगर h की जगह 0 डालोगे, this will come as finite. तो इसको लिमिट में अलग कर दो. बचा क्या? दिस एंड दिस. सो उसको भी लिमिट में अलग कर दिया. ओके, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 sin थीटा, नीचे थीटा चाहिए, इसको नीचे लिख दो, इंटू कर दो. इसको नीचे लिखने से पहले व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व, कैन वी मेक दिस थीटा इन द लिमिट? यस वी कैन. एडिंग x both the sides, taking root both the sides, subtracting minus root x both the sides. I have these things I have taught you. So what I am doing, sin theta नीचे theta into theta, rest over term is here h. Okay, now this becomes a formula. इसमें h की जगह 0 डाल दो, root x plus 0, cos root x into cos root x, cos square root x, that is x square root x. Next, limit sin theta by theta, इस theta को यहाँ लिख दिया. So this becomes a formula 1 into limit h tends to 0 under root x plus h minus root x by h. Now what to do with this term? Directly, if we can we substitute directly 0 here? No. Because it's coming, it will always be able to check, can I directly डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ? Can we substitute the limit value or not? Here we cannot substitute the limit value. Why? Because it is coming 0 in the denominator. This will come infinity. So root है, we are rationalizing the term. After rationalizing the time, we will see that this is cancelling out. We left with this term in the denominator. If we substitute here 0, it will come as finite. So I'm substituting the 0 value. h की जगह 0 डाल दे रहा हूँ. So we got the answer. Okay, class. Okay, the next question. Differentiate e to power root x using first principle. So f of x equals to e to power root x. And what is f of x plus h? E to power under root x plus h. S की जगह x plus h लिख दो. So by first principle, f dash x is what? Limit h tends to 0. F of x plus h minus f of x by h. Value डालो. F of x plus h e to power under root x plus h minus e to power under root x by h. Now, सबसे पहला काम क्या? लिमिट पुट करो. देखो नीचे 0 आ रहा है. That means it is becoming infinity. So we have to do process. Now in limit starter we understand e to power x वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाना पड़ता है. फॉर्मूला क्या बोलता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 e to power x minus 1 by x, इसका वैल्यू 1 होता है. तो मुझे 1 बनाना पड़ेगा. दैट मींस इसको 1 बनाना पड़ेगा.
So dividing by e to power x, multiplying by e to power x. E to power x plus h divided by e to power x minus e to power x root x by e to power root x is 1 dividing by h. Now this is actually a constant. Variable is h. ये h है ही नहीं, इसमें constant है, बाहर निकल गया. So limit s to 0 e to power under root x plus h minus root x minus 1 by h. Now अब क्या करें? e to power x minus 1 ये नीचे आना चाहिए फॉर्मूला बनने के लिए. Whatever we have in the power, the same thing should be here. So I can write this thing here, but we have to see whether this we can make it in the limit or not. तो क्या ये लिमिट बना सकता हूँ? तो हाँ बना सकता हूँ. अभी तक समझ गया मैंने. Adding x both the sides, taking root both the sides, we can make it. So what I'm doing, I'm dividing by this term under root x plus h minus root x. Since we are dividing, we are multiplying also, and rest over term. What is rest over term? H. I'm adding here. Now we are segregating. This becomes a formula. तो e to power root x इसको अलग से लिख दिया. ये चीज यहाँ लिख दिया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए. Limit under root x plus h minus root x tends to 0. E to power this minus 1 by this. This becomes a formula into limit this term. Now what to do with this term? Direct h अगर 0 डालूंगा फिर से infinity आएगा. So root है, rationalize करो. This thing we did. Okay, after rationalization, x is cancelling out, h is cancelling out. Now whatever we have in the denominator, this is finite. It's not coming 0. So substitute h equals to 0 here. We got the answer. Okay, let's go to the next question. Okay, class, this is the last question of the first principle which I am doing. Other than whatever question we have solved now in this video, there are many more sums. Please practice from R.S. Agarwal. Okay, or from NCERT. Differentiate sin x by x using first principle. So what is f of x? Sin x by x. Now what is f of x plus h? Wherever you have x, you have to write x plus h. Sin x plus h divided by x plus h. Clear? I hope this is clear. जहां जहां x होगा वहां पे x plus h लिखना है. Now my first principle, what are the definition? F plus x limit is to 0. F of x plus h sin of x plus h by x plus h minus f of x sin x by h. अब इस क्वेश्चन के साथ क्या करूं मैं? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो नीचे इंफिनिटी आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा तो इंफिनिटी आ जाएगा. So what to do with this? So till now, whenever you face something by something, something by something, we take LCM. So take LCM now. X into x plus h LCM. X into sin of x plus h minus x plus h into sin x divided by h. अब मैं क्या करूं? There is no formula now. कोई formula तो बन नहीं रहा. So we have this term, this term, this term, this term, in which this x is a constant. बाहर निकाल दो. As well as in this term, if I substitute 0, you will get finite. X plus 0 is x. तो इसको अलग से लेवल पे कर दिया. Clear? तो रेस्ट इज क्या है? ये और ये. यहाँ पे अगर 0 डालोगे तो क्या है? x sin x minus x sin x. ये 0 आ रहा है, पूरा चीज 0 आ रहा है. तो इसको और इसको अलग करो. इसको अलग से लिमिट में लिखो. ठीक है? क्लियर? तो मैंने इसको और इसको अलग कर दिया. डन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं थोड़ा इसको अजीब सा किया हुआ है तो मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, so that the things become a little bit easy for you. So what I'm doing, what I'm thinking, listen very carefully. First 1 by x outside constant है. Next x plus h, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है. इस पूरे टर्म में अगर h 0 डालूं तो ये 0 आता है, इसमें 0 आता है, इसमें 0 नहीं आता है और ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर है. इसमें 0 नहीं आता है तो इसको लिमिट में अलग कर दो. 1 by x plus h अलग कर दिया. इनटू क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0. ओके, ये बचा और ये बचा. इसके साथ मैं क्या करूंगा? नीचे तो h बचा, फाइन, नीचे h बच गया, दैट इज ओके. नाउ व्हाट टू डू विद दिस टर्म? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी सॉल्व इन द लिमिट्स चैप्टर. यहाँ पे x समथिंग, यहाँ पे x plus h समथिंग. बेसिकली वी कैनॉट अप्लाई द फॉर्मूला sin a माइनस sin b cos a नहीं लगेगा. सो इधर x है, इसको अगर मैं खोलूंगा यहाँ पे एक x आ जाएगा. So that we can make the x term equal, like terms बना रहा हूं. That's why we are opening the bracket here. X sin of x plus h minus x into sin x minus h into sin x. So what I'm doing, I'm opening the bracket. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 by x plus 0, that is 1 by x square. 1 by x into 1 by x become 1 by x square. Now इसके साथ क्या करूं? मैंने क्यों ओपन किया? मैंने ये देखो x अब दोनों से कॉमन आएगा तो इनको एक साथ लिखो. x कॉमन, साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x माइनस h साइन x. इससे फायदा क्या हुआ? नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला साइन a माइनस साइन b. वी आर डूइंग द क्वेश्चन फ्रॉम लॉन्ग टाइम. वी गॉट दिस फॉर्मूला. व्हेनेवर वी गेट दिस फॉर्मूला वी अप्लाई द फॉर्मूला. दैट इज द रीजन वी ओपन दिस ब्रैकेट सो दैट वी कैन गेट x टर्म्स. ओके, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस टर्म. ओके, नाउ
इसमें तो फॉर्मूला लगा देंगे. अब व्हाट टू डू नेक्स्ट? दिस इज वन टर्म, दिस इज वन टर्म. डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता, इंफिनिटी आएगा. तो कैन आई सेग्रीगेट दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस? कैन आई डू इट? यस. इफ आई डू दिस बाय दिस, एच कट जाएगा इन द सेकेंड टर्म. सो एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा. अगर मैं सेग्रीगेट करूं तो एच कट जाएगा. दिस टर्म विल बी फ्री ऑफ वेरिएबल. So it's profitable to me. That's what I'm doing, segregating this by this by this. ये देखो. Limit will segregate limit this by this minus limit this by this minus limit this by this. यहाँ पे क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? जैसे मैंने लिमिट अलग किया, ये वाला टर्म डिनोमिनेटर अलग कर दिया, लिमिट अलग कर दिया, h is cancelling out. Since h is cancelling out, there is no value of h to substitute. The answer ये रहेगा sin x. Because we studied in limit chapter, let limit x tends to 0, 2 is nothing but 2. Because there is no x value to substitute. Similarly, limit h tends to 0 sin x. There is no h to substitute. The answer is sin x, limit is gone. Now what to do with this? ये तो हमने शुरू से सॉल्व कर रहे हैं. सबसे पहला एग्जांपल sin a minus sin b, 2 sin 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2. Again 2 is a constant outside. इसमें अगर तुम h 0 डालोगे तो फाइनाइट आएगा, तो उसको लिमिट में अलग कर दिया. And this is what limit h 0 sin h by 2 by h. फॉर्मूला लगाया, फिर मैंने देखा इसमें मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो फाइनाइट आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 आएगा, इसमें तो इनको अलग किया और इसमें डायरेक्टली लिमिट डाल रही है. ना ये क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है sin थीटा, नीचे किससे कमी है? 2 का into 2 divided by 2. Okay, now what will happen? 1 by x square 2x, this become what? Cos 2x plus 0 by 2, that is cos x, 2x by 2. Okay, into 1 by 2 बाहर, limit h by 2 tends to 0, sin h by 2 divided by h by 2, this becomes 1 minus sin x. ये क्या हो जाएगा? 1 by x square into 2x cos x into half, this becomes 1 minus 1 by x square sin x. तो finally what you got the answer? ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आया? 1 by x cos x minus 1 by x square sin x. This is the f dash x. Okay, so this is f dash x. Now, how to check whether this answer is correct or wrong? So differentiate करो ddx of sin x by x. तो इसका फॉर्मूला आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये क्या है? x is variable, variable variable. इसका फॉर्मूला क्या होता है? ddx of variable variable का फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. लेट्स गो फॉर दिस फॉर्मूला. डिनोमिनेटर स्क्वायर x स्क्वायर, denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator. Okay, denominator is x v. So कैसे पढ़ेंगे? denominator square denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator. Denominator square x square, denominator x differentiation numerator sin x minus numerator differentiation of denominator. ये कितना आएगा? dx of sin x is cos x minus sin x divided by x square. देखो ये और ये सेम है. अगर मैं अलग अलग कर दूं तो यह जाएगा 1 by x cos x minus sin x by x square. So we can cross check also whether we got the correct answer or not. Okay, this is the first part of differentiation is over. That is differentiation using first principle. The rest part of the differentiation chapter is very easy. It's not a big issue that we can hardly complete in 2 videos. Okay class, that's all for this. Thank you very much.